गाना लगा दीजिए। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उषा, उषा, ओवर टू यू। स्टार्ट कर ओके, दो। थैंक यू कनक भाई। हेलो हेलो। हाँ मासी, आवाज अच्छे तो कंटिन्यू करो। ओके, थैंक यू। आज आमाजी होस्ट उषा लदड़ बात करा थी। आज कनकबेन जी जगह ते थोड़ा कनकबेन बिजी आई, तो आवनी जी थोड़ा प्रॉक्सी करा थी, तो मड़ी जो स्वागत है। आज पा जड़ी ते पा कोई जो फेस जो एक्सप्रेशन नरी पा समझी सको कि हूँ राइट बोले तो कि रॉन्ग बोले तो ऑडी तेज आज पाकड़ी स्टडी ते विचार करदा से सोनदा से विषय जन जो नाम है ग्राफियोलॉजी, जे पाके निशिता सावर पाके समझाइंदा उन विषय। सो निशिता यू आर देयर? Yes, yes. निशिता, हाँ, to you. Welcome Nishita. We'll be very grateful to hear from you. Thank you. And विषय असा के थोड़ो जणायला है. Okay, so Nishita, to you, please. Okay, okay. Thank you much. Introduction ले मणि के मुझे जय श्री कृष्ण। आउ निष्ठा किरण सावर थाना थी। हेवर में मुझे LLB कंप्लीट थियो एंड 2021 लॉकडाउन में आउ ग्राफोलॉजी जो कोर्स करे वो सर्टिफाइड कोर्स एंड सिंस देन आउ प्रोफेशनली भी उनके प्रैक्टिस कराती ने एडते वर्कशॉप्स ने भी कंडक्ट कराती। सो एक मिनट आउ मुझे स्क्रीन शेयर करा। So, जड़े पा ग्राफोलॉजी बारे में बोलूं, the first question is what is ग्राफोलॉजी को नक्की करो कंसेप्ट है साइंटिफिक आई बी नाय केड़े देता है। सो घणे बधा मिथ्स है अंजा आसपास। तो पहला तो आऊं चाह के दिस इज अ प्योर साइंटिफिक मेथड अन जो एड़ो ने क इएज लोगों के लगे तो ने डेवलप थियले प्रॉपर रिसर्च ने साइंटिफिक मेथड थी आए ने अज आऊं आवटा जो को एक्टिविटी कराइंदीस ने अगर जन रीते अई आंजी ज हैंडराइटिंग में वो वस्तु के निर्दा ताकि पण के भी भरोसो થઈ વંદો को ही कितले हद सुधी दिस इज ट्रू। सो हाणे ग्राफ इन जनरल भी पा कदे नेहरू मैथ्स में पा ग्राफ्स ड्रॉ करयावा तो करो थी जेडो पा ग्राफ ड्रॉ करू एट द एंड पाके किक रिजल्ट मले तो किक एनालिसिस मले तो किक समझाए तो हनमे थी दिस इज द सेम हड़ा ग्राफ जे बदले आवांजी हैंडराइटिंग के स्टडी कराती अंजा स्ट्रोक्स केड़ाई ए बी सी डी केड़ते हणे जड़े पा नंढा वासी पा मणी वटे सेम बुक्स व्यू एक ज रीते पा ए लखे जो सख्यो पण छतांय पा मणी जा अल्फाबेट्स एक बीजे थी अलग है अक्षर अलग है कोई जा वड्डा है कोई जा नंढा है आडा तेड़ा है तो ही मळे ओवर द टाइम जी आंजो नेचर बिहेवियर ही मळे डेवलप थिए ना तो आंजी ग्राफ आंजी हैंडराइटिंग भी अनज रीते डेवलप थी थी। सो आंजो सबकॉन्शियस माइंड आंजो अंतर मन कन रीते केड़वायलो आए एडी रीते आंजी हैंडराइटिंग बार नकरी ने छे ने ही हैंडराइटिंग के असी स्टडी करू ने सपोज कोई अनमे इश्यूज आता होय लाइक कोई के बहु एंजाइटी थी थी कोई के बहु जल्दी गुस्सो अचे तो शॉर्ट टेम्पर्डनेस आए नंढा छोकरा होय तो घणी वार नंढा छोकरा अचानक थी बहु चिड़चिड़ करेले लगे था तो खबर नथी पे करू है तो ही मळे जो कोई इश्यूज है अनके असी थ्रू ग्राफोथेरेपी जो ग्राफोलॉजी जो जकड़ो भाग है अनथी सॉल्व करू। सो थ्रू आउट दिस 1 hour सेशन आ मुझो बेस्ट ट्राई करतीस काके ग्राफोलॉजी करो आइडिया आए से समझाइया ने ग्राफोथेरेपी असी केड़ी रीते ने आके अनमे की बेनिफिट मले से आके जणाइया। तो स्टार्टिंग में I'll need one small favor. आऊं लकी ने हलायो को पेन ने पेपर साथे वेजा so blank paper ते with a blue pen preferably black उंदी तो भी हल्दो कोई भी कलर जी हल्दी वो थी 3 लाइन पंजे विषय लखो ने नीचे अनके 3 वक्त आंजी जो को नॉर्मल सिग्नेचर एं करो ता ई साइन करो
You can write કાંજો નાલો કરો આય કેટલે years જાયો અહીં profession કરો તા કરો ભણ્યા આયો કાંજો અજો દિવસ કેળો anything 3 to 4 lines about yourself અહીં પેપર તે લખો અને કે નીચે 3 વખત સાઇન કરો. Yes. Yes. એક જ મિનિટ હજી વાટ નેરું કદાચ હજી લખતા ਹੁੰਦਾ then we continue. Okay, I guess we can continue. Okay. Okay. तो हणे आ वटे जो को पेपर आए वो अज जे सेशन ले जो हैंडराइटिंग सैंपल थयो. So हणे बा धीरे धीरे अंकेज एनालाइज कर दसे ने बिकॉज़ ही आंजो पंजो सैंपल आए आके आंजो पंजो नेचर भी खबर है. So this is like a cross check for you. કે આઉં જો को चाहती ने आंजे हाथ में जो को सैंपल आए ई मैच थिए तो न तो थिए. So first is कदे भी आई निर्धार आई ही स्पेशली ब्लैंक पेपर ते एकले लखा जे ओके रूल पेपर हो ना तो आके अकड़ी लाइन दनेली है आके अंते ज लखे जो आगे खबर है पण रूल पेपर जड़े रूल पेपर नने ब्लैंक पेपर होय then you get the liberty आवटे चांस है ऊपर सीधो आडो तेड़ो आंजी लाइन की बने थी. So लाइन के गेस करेले you can keep your paper at a little distance ने आके ख्याल दो का आंजी लाइन टेढ़ी बने थी થોડીક નીચલી બાજુ આય તો પ્રોપર એકદમ સ્ટ્રેટ મે લખાયો તો કેડી રીતે આય. તો હણે અંતિ અંજો મતલબ કરો છો in case your line is upwards here towards the sky then it is like I as a person બહુ પોઝિટિવ આયો એનર્જેટિક આયો આકે આ સામે જો કો ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ અચેતી you are ready to accept it. You મતલબ you look forward અહીં આગળ વધો અહીં આંજો જ્યારે નેક્સ્ટ દિવસ ઉગીના અન પેલા રાત જો અહીં પોઝિટિવ આયો તો ના સવારે કિક સારો થીંદો કિક આઉં પોઝિટિવ કર દીસ આઉં પ્રોડક્ટિવ કર દીસ મુકે સવારે પંજી રીત में કિક હજી નવો કરે જો આય. So this is very positive nature जो को एड़े लोगों में देखा है जंजी लाइन अप साइड ते हुई. Then there are people जनी जी almost straight मतलब 100% ruler straight था ना बट ऑलमोस्ट स्ट्रेट જ હોય કે ઉપર નીચે કી ના દેખાતી સીધી રીતે રખેલો હોય. ही લોકો થોડા સ્ટબર્ન થોડા जिद्दी नेचर જમે. સો અની જો કેડો હોય ના કે મુકે ही વસ્તુ ही ખપેતી તો હેડી જ ખપેતી. they are not ready, they are not so easy to adjust. They'll be like જકો વસ્તુ જી આય મુકે ઈ જ ખપતી ને હંજો પોઝિટિવ સાઈડ ઈ આય કે હેડા લોકો પંજે કમતે બહુ ફોકસ્ડ હોય એટલે અહીં આની કે એક બી કમ સોંપતા તો એ એકદમ ધ્યાનથી પંજો કમ કરતા. they would not bring any other distractions in it and so અને થર્ડ ને લાસ્ટલી જો કે નેરેલે મળે that is descending એટલે અરે અરે નીચે વને તો સ્ટાર્ટ ઉપરથી આય પણ ધીરે ધીરે લગતે લગતે કદાચ થોડુંક નીચે અચી વને તો હેડા લોકો નર્વસ હોય કડે કડે ડિપ્રેશન બી હોઈ શકે. તો એ સતત હકડે ટેન્શન में हकड़े प्रेशर में जीवता है. सो दैट इज व्हाई यानी के कोई कम कड़ो की भी सोकू तो धीरे धीरे पंजी रीते ज पण अवस्था वेंदा तो मुती थिंदो आउ करी सकदीस भले आमे कॉन्फिडेंस आए यू हैव दैट कैपेबिलिटी आल्सो आई करी सकता 100% जी बात है. तो ए द्रजीवनु बेसिक हाउसवाइफ एग्जांपल दिया था ही रसोई करो ता ही रोजी परफेक्ट रसोई करो ता ने अचानक आके 5 वागे कॉल अचे कज राज्य जमे में 10 जना अचेता यू आर केपेबल इनफ मळे रिसोर्सेस आई पंड भी करी सकता छताय नर्वस थेंदा थिंदो की थिंदो आउ की कर दिस केडी रीते. सो जंजी ही लोअर बेस लाइन होय ना अनी में हीट रेट बहु इजीली नेरेले मले
तो જરાક બી કઈક સ્થિતિ હોય તો નર્વસ ને હું ટેન્શન में अची वञे आऊं की करतीस कोई के डाउट है आडा सुधी fine. Okay, we'll move ahead. Now the size of your handwriting. he भी જે આઉં પહેલા છો અહીં પંજી sample કે થોડો distance તે નેરદા ના. So at this distance also proper eye length આકે અગર આંજી properly legible है અહીં વાંચી શકો તા then you consider it as a large handwriting. પણ જો આકે થોડોક નજીક ખણી અચનું પેતો સરખો ध्यान દઈને વાંચનું પેતો then your is something that comes into a smaller category. Now જોકો જંજી લાર્જ है handwriting સરખી मतलब दूर भी रखाओ पेपर तुमके सरखो लखेलो स्पष्ट वंचा जेतो ककोरो लखेलो है हेड़ा लोको इन पब्लिक बहु कॉन्फिडेंट जोवाय छे लाइक ऑडियंस के एड्रेस करनो वडे लोको मतलब गच बदे लोको सामे पण जा थॉट्स આગળ રખના પણ કે की फील थिए तो ही चोनो हेड़ो मळे अनि के बहु इजीली आवड़े दे आर कॉन्फिडेंट फ्रॉम इनसाइड एंड दीज आर द पीपल जन्मे लीडरशिप क्वॉलिटीज भी नेरेले मळे मतलब आखे गच बदे लोको के साथे भेगो मलाईनु ने આગળ કરીને की करनु तो हेड़ा लीडरशिप क्वॉलिटीज हनी में इजीली देखा जाए बिकॉज दे आर कॉन्फिडेंट फ्रॉम इनसाइड स्मणी के भेगो खणी ने हलनो अनि के गमे तो ने आवड़े भी तो ईज अगर અહીં स्मॉल साइज वाला नेरो तो हेड़ा लोको बहु डिटेल ओरिएंटेड हो मतलब અહીં के कम चोंदा ना तो नंढी नंढी बारीकी भी बहु ध्यान थी नेता तो सरखो थिए तो न प्रॉपर वर्क थिए तो न ने हेड़े लोको के पंजी पर्सनल ग्रोथ पंजी इम्प्रूवमेंट करनो भी बहु गमे तो सतत अनि के ध्यान में होंदो कि मुके पंजी जात के हजी की बेटर करा कि कोरो कोरो इम्प्रूवमेंट्स हम खणी अचा तो दी स्मॉल थिंग्स ई बहु ध्यान में रखे कदेक नेगेटिव भी होए कि नंढी नंढी वस्तु याद भी रही वने पण एड़ो जरूरी नहीं ओवरऑल अगर आंजी हैंडराइटिंग नंढी भी आए देन आल्सो इट इज ओके देन वी कम टुवर्ड्स द लेटर्स सो ग्राफोलॉजी में दरेक लेटर जो बिग और स्मॉल किक ना किक मीनिंग आए जन रीते અહીં લખોતા અન પ્રમાણે અને જી આઉં હડા ત્રે ટાઈપ જા એ ડ્રો કે અહીં આઉં જી પેલા છો કે એ તો પા હકડો જ સખ્યાવાસી એક જ રીતે પાકે સખાઈ માં આવે પણ છતાંય અજ અહીં પંજાન में नेरो कडाक ना कडाक અહીં એ હકડો कडाक લખ્યા જ ના आई एम में हुंदो हैव में कोई भी लेटर वर्ड में वच में ए हुंदो तो नेरो ए जी स्टाइल कडाक ना कडाक एन जी चेंज्ड हुंदी it will not be as same as जी आके सखाई में आवेलो तो ये आंजे नेचर प्रमाणे धीरे धीरे डेवलप थिएलो एआई सो पहलो आए जो को आखो राउंड एंड क्लोज्ड है कदा थी भी इनके गैप्स नहीं जग्या ना है कदा भी स्ट्रोक मिस नहीं थो प्रॉपर राउंड आए ने पोंजे नीचे डांडी आवी है सो दिस इज क्लोज्ड फ्रॉम ऑल साइड आखी जगह थी बंद आए हेड़ा लोको जो को है ना अने के बहु बे साथे बात करे जो नतो गमे ई नॉर्मल बात करदा पण विदाउट एनी टॉपिक पाछू ना इए ज बड़बड़ करे हेड़ा लोको नहीं अने के फक्त कम पूरती जो को वातु आई जटलो नीडेड आए रिक्वायर्ड आई एटलो ज बोलता एंड दिस इज द पॉजिटिव साइन आल्सो आई हेडे लोको के अगर आंदी सीक्रेट्स बनीने चोंदा ना ई कदे बार नहीं है आई कैन गारंटी दैट टू यू बिकॉज अनी के आदत है पण सुधी रखनु जरूरियात होय ओडा ज बोलनु सो दीज आर वेरी क्लोज्ड पीपल ने जो को सेकंड नंबर था ओपनिंग फ्रॉम द टॉप એટલે ઉપર જો આંજો જો को सर्कल है ना ओडा ओपनिंग है हेड़ा लोको अपोजिट बहु ज बोलेले गमे तो कदे खत्म જ નહીં થયાની जी वात तो અહીં કલાક વ્યો ખાની સાથે બહુ કલાક વ્યો નોન સ્ટોપ एंड दिस इज द अपोजिट हनी के आके सीक्रेट्स नाई चे जी हनी के जो को आंजी पंजी बात है नाई चे जी अंजो रीजन एडो आए का दे आर नॉट चाय કરીને કોઈ કે વની નહીં છે ઊંધા કાંજો ખરાબ ઈચ્છિંદા એડા નહીં પણ અની કે આટલી બોલે જી સતત આદત આય કે કંટ્રોલ જ નહીં કરી શકે એ કડે બોલી દીંदा ને અની કે પણ કે ખ્યાલ નહીં છે સો ધીસ આર ધ પીપલ અની કે બોલવું બહુ જ ગમે છે देन जो को ત્રીજો આય दैट इज અહીં જડાથી સ્ટાર્ટ કરોતા ને જડા એન્ડ કરોતા બોય જે વચ में गैप आए ये हड़ा एंड में भी अची सके स्टार्ट में ऊपर जी साइड भी देखाई सके
anywhere, but where you start and where you end, હન બોય જે વચમાં આપણો gap create થઈએ તો. This is also a very positive way of writing your A, because this shows કે અહીં open આંજો મન અને આંજો મગજ એ નવી opportunity છો, નવી ideas છો, હરી મળી કે open બી આય ને accept બી કરો તા. So usually જોકો એડા લોકો જેમ કે ગજ બધા લોકો જે થોટ્સ ભેગા સોડના ગમે, નવી નવી વસ્તુ નેરની કરની મળે ગમે, અને મેં યુઝ્યુઅલી એ દેખાય because they are ready to accept કે કિક બી નવો ઊંધો ત્યાં આવું સોંધો છે. અંકે કરનું ન કરનું is a second question, but at least આવું સોંધો છે, સમજતો છે કે વસ્તુ કોરો આય, મુકે કઈ ખપે કે ન કઈ ખપે. અન સિવાય કોઈ જો એડો એ આય જો કો કવર ના થયો કે એની ડાઉટ સ્ટીલ નાઉ? ઓકે, આઈ ગેસ આગળ વધી શકું. ઓકે, સો નેક્સ્ટ ઇઝ લેટર H. H stands for knowledge. વ્યક્તિ में કેટલી નોલેજ આય કે નોલેજ ગેનિંગ જી કેપેસિટી કેટલી આય, કેડી રીતથી આય, ही પાકે H થી ખબર પે. પહેલો આય લૂપ વાળો H, ઉપર ને રોકડો લૂપ બનેલો આય અને પર નીચે નોર્મલ H લખેલો આય. અગેન જી આ લાસ્ટ એ મેં છો ही લોકો બી ઓપન માઇન્ડેડ છો આજે, ઓપન ટુ ન્યુ આઈડિયાઝ, નવો કિક કરનું આય, કોઈ કચીને પાકે નવો એક્સપિરિયન્સ શેર કરે તો ही મને સોનું આની કે બહુ ગમે. એન્ડ દે આર ઓલ્સો કન્સિડર્ડ ઇન્ટેલિજન્ટ, એટલે બહુ મગજવાળા સમજો क्योंकि ही ओपन नहीं तो यानी कि जड़ा थी भी नॉलेज મળે જો સોર્સ ઊંધો ના, they'll grab it, ये इनके एक्सेप्ट करदा कि अच्छा किक नवो आएगा ते पास सोनी गनु किक तो सखेले मल दो, किक तन में थी पाके समझाइन दो. that is the reason why કે over the time હરે એટલી નોલેજ ગેઇન કરે તો હરેક કોઈક સબ્જેક્ટ માની માટે બોલેલી નક્કી કાય કિક આની કે ખબર હે વિષય. સેકન્ડ આય જો કો અગેન સિમ્પલ આય, બસ લૂપ અનમે થી નકરી હોય, નોર્મલ દાંડિયા ને H જો કર્વ આય. ही લોકો આર વેરી ડાયરેક્ટ સ્પીકિંગ, ધેટ મીન્સ આની જે મન में જોકો આય ને એ આખે અચીને મોતે ચોંદા, એ આથી કડે કી છુપાઈંદા ન કડે શુગર કોટ કરીને મીઠો ચઈને વસ્તુ ચોનકી નહીં કરે. જોકો અહીં જેડા અહીં એ આંજે મોતે, they'll not hide anything from you, which is also a very good sign. પોય H में ना પાછળજી બાજુ એરો એંગલ થી ही एक ટેડો આય, પાછળજી બાજુ પ્રોપર એંગલ ફોર્મ થી. હેડા લોકો જો કહે ના કદાચ પંજે પાસ્ટ में અટક્યા આય, કદાચ ભૂતકાળ આની સાથે એડો કિક થયો આય કે there is some incident જંજો આની કે ખરાબ લગો હોય કે જોકો આની કે બહુ ઇફેક્ટ કરી વ્યો હોય. સો હેડે પાસ્ટ में उ લોકો અટકેલા આય લાઈક કેટલો બી લાઈફ में, ભલે उ વસ્તુ 5 વર્ષ પહેલા થઈ ਹੁੰਦੀ કે 10 વર્ષ પહેલા થઈ ਹੁੰਦੀ કે એકદમ નાનપણ में થઈ ਹੁੰਦੀ, પણ કદાચ ઈ વસ્તુ ઈ થોટ અને જે મન में ઘર કરી ગયો. લાઈક કેટલા બી આગળ વંદા લાઈફ में નો उ એક થોટ है जो આકે પકડી રખતો, જો વરી વરી આંજે મગજ में હતો કે ના મુ સાથે એડો થયો હો કે હન કારણ આવ આગળ નથી વધી સકા કે ही વ્યક્તિ આય કોઈક એડો પાસ્ટ જો રિલેશન है जिनमें ई अटकेला पिया ने जो को फोर्थ वाળો आए एंगल इन द राइट એટલે H જે આગળ जी बाजू एंगल फॉर्म किए तो ये अंजा अपोजिट है. पहला वाला पास्ट में अटके ही फ्यूचर में स्टक है, कदाक फ्यूचर आइडियाज थी द्रजेता, फ्यूचर में कोरो थींदो, मुझो फ्यूचर केड़ो हुंदो आऊं की कर दीस, हंथी बहु टेंस्ड है हेड़ा लोको है. So these are also people का जन के आवड़तो भी हुंदो, वस्तु जी नॉलेज आए आवड़े तो मड़े प्रॉपर है, पण फ्यूचर जो नर्वस थे ने तो ना ना मुके नहीं करनु, अपॉर्चुनिटी हुंदी तो भी ना चिंता करना मुथी नहीं थी कदाच आई एम नॉट मेड फॉर इट, मुझो कमज नहीं ना ही मुथी की थींदो. तो हेड़ा लोको जो कहीं सिर्फ फ्यूचर के गनी ने बहुत टेंस થઈ રહેતા. ने जो को नेक्स्ट आए is again similar but completely different. पहले जन में
बैक साइड में पंहिंजो एंगल बंदो हो, दिस इज अ कर्व, प्रॉपर कर्व थिए तो ही लोको पास्ट में जेको भी थियो एक्सेप्ट करी चुके बहु स्मूथली अने अनी जो जेको पास्ट हो जेको जी थियो दे हैव एक्सेप्टेड इट इज ओके एड़ो थियो हणे पाके आगळ वधे जो मुके हणे मुजो आगळ जो नेरे जो तो पास्ट में भले खराब भी थियो हुंदो हिनी जो स्मूथ है एकदम कर्व है एनो मतलब ई एक्सेप्ट करी चुके व्हाटएवर हैपेंड सारे ले थियो हणे तो થઈ ગયો है ना हणे आ वंजी विचार કરીને को करा सो लाइक दैट वेज અને જો કો 6 થાય જન્મે કર્વ hg આગળ જે બાજુ ફોર્મ થયે તો that is also completely opposite फ्यूचर जे बारे में पॉजिटिव आई हैप्पी आई जो को हुंदो मुजो सारो थिंदो आई एम कॉन्फिडेंट का आऊं करी सकदिस तेड़ी रीते अनी जो को फ्यूचर है that is comparatively better because they in themselves are very confident कनी के पंथी आत्मविश्वास आएगा आऊं जो को कर दिस आऊं सारे मन थी कर दिस तो मुझे तो सारो ज थिंदो so that is the main difference हड़ा सुधी कोई के की डाउट का आंजो कोई लखेलो लेटर आऊं एक्सप्लेन के आंथी अलग आई કે બઈ રીત જ દેખાય તા ને ही माड़े जोको आए ई आई आंजी हैंडराइटिंग में नेरी सको आंजे किड्स जे हैंडराइटिंग में भी आके ही माड़े वस्तु देखाएंगी स्पेशली अगर स्कूल गोइंग किड आए नियर टू 16-18 years of kids आई तो हनी में भी ही वस्तु माड़े नेनी इम्पोर्टेंट आई बिकॉज 18 years is a age जड़ा माइंड सरखो एकदम डेवलप थई ने हणे एक नवे फेज में वले तो मळे स्कूल ने पति वई हणे एक्चुअल करियर बिल्डिंग ने थी थी तो we recommend that age is also very crucial Okay. वो general points to remember हकड़ो do not do too much cutting or scribbling on your mistakes એટલે ઘણી વાર કરો થેપા લગદે લગદે અકાંદો વર્ડ ખોટો લખાઈ ગયો સ્પેલિંગ મિસ્ટેક થઈ તો પાકો કરો આખો ઇંક છેકી હજુ જાણે કોઈ વાંચી જ ન શકે કોઈ કિનેરી જ ન શકે નેવર ડુ ધેટ આથી ભૂલ થઈ ઓકે એક્સેપ્ટ કરો એક લાઈન મારો એક સ્લેશ કરીને એમ કે કટ કરી હજો અહીં હકડો સ્લેશ કરતા તો બી સામે જો કોઈ વ્યક્તિ વાંચે તો અનકે તો ખબર જ હે કે ही ખોટો વર્ડ હે પાક મુકે ही કન્સિડર જ નહીં કરે જો ही જો કો બી ઊંધો ખરાબ હે પાકે આગળ તે જોવાય પણ અહીં અગર એનકે ગુટી ગુટીને કરતા તો એને મતલબ કરો થયો અહીં છુપાઈજી કોશિશ કરો તા મુથી કરો ભૂલ થઈને મુકે મુકે છુપાઈ જ નહીં મુકે ચોનું જ નહીં સામેવાળીથી કાવડા કરો ભૂલ કરી ગઈ को करे जो भूल थई इट इज ओके एक स्लैश करे जो मतलब है करो क्या सामे वाले के पेपर देने टाणे आई एक्सेप्ट मुझे बोला मुथी अडाई फोटो लखायो है पण अंजे आगर जो बराबर है सो दिस इज स्मॉल थिंग सो एक्सेप्ट इट भूल थई एक्सेप्ट करो एक स्लैश करो डैश करीने कट करो बट एनके स्क्रिबल करीने आखो हूं न करे लेवनो सेकंड इज यूज द हैंडराइटिंग स्टाइल दैट यू हैव लर्नड फ्रॉम द बेसिक तो हणे घणे बधा दिस इज स्पेशली फॉर किड्स तो घणे बधे हणे एड़ो थे तो स्कूल में पहला थी कर्सिव सखाई था कि पहला थी नॉर्मल एबीसीडी जो को बाद छुट्टी लखू डिस्टेंस असीचू ई सखाई था सो करो थी अगर आके डिस्टेंस सखेली होय तो धीरे धीरे बच्चा बाहर नेरे ट्यूशन्स में नेरे अरे हुने नो कर्सिव लखे तो कड़ो सरस लखे तो मुके भी हेडो लखनु है एंड दे स्टार्ट राइटिंग दैट हड़ा प्रॉब्लम करो है को पहला थी कर्सिव न तो सके जे आके स्कूल में प्रॉपर राइटिंग सखायली है एडी रीते न तो सके ने वो डायरेक्ट करे लेवनु तो हेड में बहुत मिस्टेक्स थी राइटिंग में जो कि धीरे धीरे आंजे सबकॉन्शियस माइंड में वो रॉन्ग छपाई थी बंदी सो अगर आके कभी चेंज करनु भी है यू फील कहणे आ सादी लखाती पण मुके कर्सिव गमे थी मुके कर्सिव ते शिफ्ट करने करो देयर इज नो प्रॉब्लम बट प्रॉपर सखीने करो ये पणजी रीते चालू न करो जी राइटिंग सखे जी एक मेथड है इनके फॉलो करो अहीं जी बुक्स कनो अनमे लेटर्स की लखायता स्ट्रोक्स की पेता ई नेरो प्रैक्टिस करो અને ધીરે ધીરે કર્સિવ લખો देयर इज नथिंग रॉन्ग बट मेथड फॉलो करो अगर ये मेथड फॉलो नहीं करो ने पणजी रीते करेले वंदा तो અહીં ચૂકીંदा सिंपल जी सिलाई है एट द एंड हो जाए सुई में दोरो वजी ने पाके टाका ज मारे जाए पण अंजी भी एक रीत है एक पद्धत है जो को पाके फॉलो करे जी तो प्रॉपर थिंदो ने तो नहीं सभाजे एड़ो जन्मे भी है अंजी रीत अंजी प्रॉपर पद्धत फॉलो करी नहीं चेंज करो इट इज ओके
बट एड्रप्टली आई करदा तो पो खोटा आंजे सबकॉन्शियस माइंड ते अफेक्ट करे जो चालू कर दो. So that was for handwriting. Now moving ahead towards your signature. Again, signature is like your logo. आंजी अकड़ी निशानी जो कोई आंजी अकड़ी छाप जो कोई छोड़ीने वनोता ने आटली इम्पोर्टंट वस्तु के स्पेशली इंडियन हाउसवाइफ बहु इजीली गनी वनेता क्योंकि अनि के अर्धे टाइम ते आवने रे एक जो को पेपर ते आई जो काडा साइन करे जे वो आचे भी नता का पेपर में कोरो लखेलो and they just sign it. The signature person जो ओकड़ो लोगो है आंजे सिग्नेचर थी भी आई ओळखाई सको ता का आई कन टाइप जा व्यक्ति आयो आंजो कॉन्फिडेंस कटलो आए आके इश्यूज कोरो आई लाइफ में तो ही बहु इम्पोर्टेंट वस्तु है that you must take care of. The signature जाओ अमुक do's and don'ts चोंदे सिंपल जो को मणि के in general लागू थिए था. The first is signature should be bigger than your handwriting. हणे आई आंजी handwriting लखेली आंजे पेपर ते आई जज करी सको था, right? तो अंथी जो का है ना आंजो signature should be bigger than that. So एक ही नेरो. अगर मुझे ऊपर जी लाइन में जो को आऊँ लख्यो है निष्ठा सावर, ही मुझे handwriting जी साइज है. तो नीचे नेरो अगर आऊँ first number ते जो का एडी आऊँ साइन करा, it is almost 1.5 times my handwriting. छोटो भी करा तो आके नंढो वाळो सावन नहीं देखा जे पण पहले नंबर ते साइन करेले आउ प्रॉपर आके विजिबल थिंदो देखाइंदो ख्याल अचिंदो कड़ा लखेलो है तो आंजी साइन भी एडी जुनी खपे आंजे हैंडराइटिंग थी एटलीस्ट 1.5 टाइम्स बिगर उनी खपे अने दूर थी भी प्रॉपरली विजिबल ने वाचिंदे फावे खपे कोरो लखेलो है. सेकंड इज इंक्लूड योर नेम इन योर सिग्नेचर. એટલે આને મુજો નિષ્ઠા સાવર રહેતા હું એન સાવર કર્યો કાં ફક્ત નિષ્ઠા હેડી રીતે હું સાઇન में કર્યો એડો કरो. ઘણે લોકો जी मिस्टेक थिए કે જોકો અની જો સરનેમ આए જોકો પપ્પા જો નાલો આए પપ્પા જો નાલો વિથ સરનેમ યુઝ્યુઅલી સરનેમ્स ही सिग्नेचर में હોય પણ જો નાલો જ નહીં તો હેડો ન કરો. सिग्नेचर आंजी आइडेंटिटी आए आंजो लोगो आए तो अगर अनमें आंजो नालो नहीं तो आंजो अर्थ करो आए. It is your that you as a person are signing this document, this check or whatever it is. पर आंजी वो identity है तो आंजो नालो तो उन्होंने छपे ना. Bring yourself in your signature. आंजो reason भी एडो है कि signature में पांच जंजो नालो लखू कि जो को भी combination of words लखू आंजो मतलब मुझे life में अन व्यक्ति प्रति कपोय अन वस्तु प्रति importance आए आओ अंते एटलो इम्पोर्टेंस दिया थी महत्व दिया थी मुझे लाइफ में. अगर मुझे सिग्नेचर में मुझे नालो नहीं जो मतलब मुझे तो कोई इम्पोर्टेंस જ नहीं. अगर आ हडा एन न लख्यो होत ने फक्त सावर लखी दो न होत तो जो मतलब ई थयो होत कि मुझे लाइफ में फक्त मुझी फैमिली जी इम्पोर्टेंट है पण जी जात जो कोई प्रायोरिटी नहीं पण जी जात के आऊं आटली इम्पोर्टेंस दिया नथी जतली आ फैमिली के दिया थी. सो प्लीज डू नॉट डू दैट. आके खपे तो कांजो सरनेम भी अंजे सिग्नेचर में ओके निष्ठा सावर है आखो जिया हडा फर्स्ट में लख्यो है आखो लखो दैट इज आल्सो करेक्ट बट पंजे नाम के એટલે पंजी जात के भूली ना इन प्लीज फैमिली टुवर्ड्स ना बॉय के भेगो रखो ना. अगर फैमिली इंपॉर्टेंट है तो आई भी अटला ज इंपॉर्टेंट है पंजी जात के भी प्रायोरिटी दो. तो whenever you sign आंजो नालो ने आंजो सरनेम नहीं हो एक बार तो भी हल दो बट नालो इज अ मस्ट. आंजे साइन में आंजे नाले जो इनिशियल होए का आखो नालो होए कोई एड़ो निकनेम है जो को लोग आके बोलाए तो जो का आके पंथी गमे तो एड़ो निकनेम लखी नहीं करो देन आल्सो इट इज ओके पण पंजो नालो पंजी छाप पंजे सिग्नेचर खपे. एंड लास्टली सिग्नेचर जी आऊं हैंडराइटिंग में पहली वो चाहिए अपवर्ड्स नहीं खपे सो दैट शोज पॉजिटिवनेस दैट शोज एनकरेजमेंट टुवर्ड्स द डे. हेडी रीते आंजी सिग्नेचर भी जो को है ना कि अपर साइड ते नहीं खपे. इट शुड गो अपवर्ड इट शुड नॉट गो स्ट्रेट इट शुड नॉट बी डाउनवर्ड्स तक कदे भी ना नहीं खपे. तो दैट विल शो यू पॉजिटिव. अहीं हेडी रीते करता ना तो अहीं कदे की साइन भी करता ना तो अंतरते आके कॉन्फिडेंस उंदो पॉजिटिव एक ओपननेस उंदी
एंड सेकेंड थिंग, गिव इट अ बेस लाइन. हेड़ा नीचे जो आके देखाय थी आ लाइन ड्रॉ कईए. અહીં કડે બી સાઇન કરો અને નીચે એક લાઈન દો ને પ્રોપર લાઈન ખેંચો. એ ન કે જરાક સ્ટાર્ટિંગ में કરી ગઈ. જેટલી વડી સાઇન है એટલી વડી લાઈન ખેંચો ना, क्योंकि અહીં लाइन ખેંચીને आंजी जात के आंजी सिग्नेचर के हकड़ो आधार देता. अगर हम ही सिग्नेचर करा तो मुझे सिग्नेचर ये हवा में है, इनके कोई आधार ना है, इनके कोई बेस का कड़ा भी नहीं, ये करेली है. पण उनजे जगह पे इफ आई डू दिस तो मुझे सिग्नेचर के हकड़ो आधार आए, हकड़ो बेस आए. म्हणजे मतलब पांजे लाइफ में भी पाके हकड़ो बेस आए. वी आर ग्राउंडेड समवेयर. पा कोई सरखा स्टेबिलिटी ते हूं, हलू डुलू नता का हवे में नहीं हूं, पा स्टेबिलिटी ते हूं. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आंजी स्ट्रेट भी होय सिग्नेचर तो स्ट्रेट लाइन करो. जी आंजी सिग्नेचर નથી એડી રીતે કરો અને પ્રોપર સિગ્નેચર કવર થયે એટલી લાઈન ડ્રો કરો. ઘણા લોકો એડા भी हुंदा जो को सिग्नेचर करे कोई આગળ પાછળ डॉट्स भी करदा हुंदा, कोई एक साइड में करे, कोई ऊपर नीचे करे. दैट इज आल्सो ओके, नो हार्म. बट इट इज इंपॉर्टेंट કે डॉट्स કેટલા અહીં ને કડા અહીં. And some basic don'ts કે ही वस्तु मुके सिग्नेचर में ना ज करी जी पूरो भी थयो ने. दिस इज नॉट करेक्ट. पहलो सिग्नेचर हांजी पंजी उनी खपे. आउ ही भी आउ बहुपति इंडियन हाउसवाइफ में नेरियो है क जो को वर दे क इने ही हेडी रीते तू सिग्नेचर करी क पप्पा जो को सखाई है तो के आने हेडी रीते सिग्नेचर करे जी है एंड वी एक्सेप्ट इट. ओके डन. सरनेम लखाई है तो भी ओके, आंडू गुंडू ब्योचकी लखाई दिए था तो भी ओके. तो जोको है ठीक है, डू नॉट डू दैट. पंजी सिग्नेचर पंजी रीते डेवलप करो. गनो ना आके के छे કે એક તરત જ સિગ્નેચર अच्छी होती नहीं अच्छे. वो दिवस गनो कोतरे वस्तु पेपर ते ट्राई करो का ही लखा हेडी रीते करा तो नालो सरनेम करा, सरनेम ने नालो करा. डू इट, हैव दैट आर्टिस्टिक लिबर्टी. कहीं ट्राई करो बोतरे दिवस दी अलग अलग सिग्नेचर ज्यां सुधी कोई एक सिग्नेचर एडी નથી जो कांजे मन के एक्सेप्टेबल होय तो ना हनमे कदाक मुके लगे तो कि मुझी झलक आए, हनमे कदाक आ पणजी जात के नेरी सकाती त्या सुधी ट्राय करो. पण प्लीज पणजी सिग्नेचर पंट करो. आके खपे तो अहीं एटले सिग्नेचर ट्राय करदा ने मुके हलाईंदो तो आ भी आके चेक करीने दींदीस, आके सजेशंस भी दींदीस कान में कोरो बेटर થઈ શકે કે कोरो अनमे नाय करे दो. पण अहीं पणजी रीते ट्राय करो. कोई आके सिग्नेचर सखाई दने आए ने हो ना, इट इज ऑलमोस्ट लाइक एक्सेप्टिंग जो को ब्यो कोई करे तो. पणजी जात जो अनमे ना अंजो मत आए, ना अनमे अंजी इंपॉर्टेंस आए, ना अंजी कोई झलक आए में की भी ना अंजो आए ज ना वो बेच कोई जो आए जो को अहीं फक्त કરી દેતા. અને જે અગર એ હેડી રીતે અંજી સિગ્નેચર પર પેજ દનેલી है ना, અહીં કડે भी कोई भी वस्तु साइन करो અહીં खुशीથી નહીં કરો તો क्योंकि वो बेजी वस्तु है. અહીં ફક્ત કરો તા પણ અહીં કે એક્સેપ્ટ નહીં ક્યા ये अंजे अंदरથી અચલી વસ્તુ જ નહીં. So always do it, especially अगर अंजे अंजे पंजा छोकरा है का आजू-बाजू कोई है near the age of 16 or 18 because 18 is the age जन कोई पा पंजी सिग्नेचर यूज करे जो चालू करू ता तानीले तो ये खास है कि पंजी रीते साइन डेवलप करो. खपे तो मुके बतायो कि कोई भी ग्राफोलॉजिस्ट के बताए नहीं सजेशंस गनो कन में कोरो खोटो आए कन के हजी बेटर की करा जे क्योंकि वो लॉन्ग टर्म आ साथे रहवारी है सिग्नेचर वो घड़ी घड़ी चेंज नहीं थिए वाली. बट प्लीज मेक इट योर ओन. बेओ कोई आके फक्त सखाए तो ई सेम કરી આગળ વધોતા તો બહુ સારો है. સેકન્ડ, અવોઇડ bilingual signature. અને ही યુઝ્યુઅલી જંજા इंटर मैरेजेस ने થયા હોય અને વધુ નેરેલે મળે કહીને રો મુજો સરનેમ સાવર है तो सा हिंदी में લખ્યો ने વરા આ इंग्लिश में કરી વધો. કાંજે જગ્યા તે સા ગુજરાતી લખો ને વર इंग्लिश में કરી વજો. ઘડા નિષ્ઠા લખાતી તો ની આ हिंदी जो લખ્યો અને બાકી જા લેટર इंग्लिश છે એટલે હું બો લેંગ્વેજીસ કે ભેગો કરીને એક સિગ્નેચર કઈ. डू नॉट डू दैट. અહીં જડે સાઇન કરો તા અહીં એક લેંગ્વેજ में करो. ही करता तो सामे वारो भी कंफ्यूज थिंदो नंजा मतलब पंजी जात में भी અહીં કદાચ कंफ्यूज्ड आयो. अंजा मन वो अलग दिशा में एक दिशा में नहीं.
So when I एक જ proper language में sign करदा, that means આંજો મન એક જ દિશા में સાથે આય ભેગો આય મન અને મગજ બોય ભેગા આય પણ અગર અહીં હેડી રીતે બહુ અલગ languages में કરदा તો અહીં કદે भी કોઈ important decision होंदो ना तो અહીં નેરજા અહીં બહુ confusion face કરતા. It will be like he करा वो करा I decided नहीं करी सको unless and until someone else helps you. तो क्योंकि मगज एक दिशा में है ने मन बे दिशा में भगे तो साथे અહીં જ નહીં. तो અહીં કોઈ भी અહીં proper हिंदी में भी करो गुजराती में साइन करो इंग्लिश में करो कोई भी लैंग्वेज खराब के सारी नहीं અહીં કોઈ भी लैंग्वेज चूज करो it is good but stick to one language. એક થી વધુ लैंग्वेज આંજી સિગ્નેચર में ના આવી ખપે. And last is avoid cutting your signature like this. એ બી ગજ બધા લોકો કરે તા નાલો લખીને એક વાર છેકી વજા તો નીચે ને રાઉ એ કરી ને અંકેત સર્કલ કરીને પાછો પંજો નાલો છેકી હોય તો છેકે જો આંજો પંજો નાલો હોય ને આંજી પંજી સાઈન આય તો બી પ્રાઉડ ઓફ ઇટ ગર્વ કરો અંતે આકે છેકીને અંકે છુપાઈનું કોલાય આય કે એડો કોલાય કરનો કે સામે વાળો સરખી રીતે ને શકે કે એક ઝલક માં કે ખ્યાલ ના છે. Don't do that. It is your sign. Be happy about it and के accept करो ने बताओ दुनिया की बड़ी वस्तु है signature. As I said, it is your logo and जी identity and जी झलक है वो. उनके बताए जड़ी वस्तु है उनके छुपाए जड़ी ना है ही cross करे जड़ी भी नहीं. Secondly, अगर इन cross भी करो ता तो जो मतलब कदाच आके पंजी जात पे भी गुस्सो आए पंजी जात के भी અહીં hate करो ता which is again bad. ને અગર અહીં કન્ટિન્યુ કરો ને તો હું ગુસ્સો કે હું હેટ્રેડ પંજી જાતનું કદી ન કરતો બોલે જો કે જડે જડે અહીં ભૂલતા ઈ બી બોલે છે હિંચ કોરો સખ્યા કોરો કે જાણે જડે જડે અહીં ભૂલી I do not hate myself હું કટ કરી કરીને આકે પાછો યાદ ઊંધો કે મુકે મૂર્તિ જાત નથી ગમે મુકે ગમે ન તો મુકે ગુસ્સો જાય પણ તે so do not do that. નોર્મલ રખો લેજિબલ રખો કોઈ નેરે તો અંકે સમજાણો ખપે કે અહીં સાઈન में કોરો લખ્યાયો ઘણે લોકો અહીં જ લીટા પાડી હોય છે પાકે અહીં લગે કે લખે મતલબ નાલો બી લખ્યા કે કોરો લખે ખબર નથી તો હેડો ન કરો. Let it be properly visible. Let it સામે વાળી કે સમજી લીધો ને કોરો લખેલા મેં કી વાંધો નહીં નેરો ઘણે લોકો કે અહીં લગે કે હું અહીં જ નહીં કરી હતો છે ને તો સામે વાળો કડે કોપી જ નહીં કરી શકતા હું સાદો લખતો છે તો કોપી કરી શકતો તો હેડો નહીં. અહીં કેટલી બી સિમ્પલ સિગ્નેચર કરતા ના અંજા અંજા પંજા સ્ટ્રોક્સ અહીં પંજી લખે જે અકડી પદ્ધત है जो को सामे वाળો કડે કોપી નહીં જ કરી શકે દેખાય મેં એ જ નેતા તેડો લગતી કે હા સિમિલર है પણ 110% સેમ હુંદી જ I can guarantee that क्योंकि वो आंजे पण में थी આવી है. That is your way of writing जो को ब्यो कोई नहीं કરી શકે. જેડો પાછું ને કોઈ કંજી બી ફિંગરપ્રિન્ટ સેમ ન હોય ટ્વિન્સ जी भी न फिंगरप्रिंट्स मणि जी अलग है एडी જ રીતે હેન્ડરાઇટિંગ દરેક વ્યક્તિ जी अलग જ है. સિમિલર દેખાઈ શકે યસ બટ સેમ નહીં હોય કડે બી અહીં ન જાય. हड़ा सुधी कोई के की डाउट्स करनी जी सिग्नेचर में कोई डाउट्स नहीं. हाँ सिग्नेचर है ना हने बैंक में ने तो पा करी गड़ी है ऑलरेडी ताणे पा चेंज करियो तो प्रॉब्लम थी है तो करो क्यों पप्पा को प्रॉब्लम थी है सी पांजी जो टिपिकल सिग्नेचर हुंदी उज हल्दी हने दा इन दैट केस भले आंजी सिग्नेचर होड़ी है बट होन सिग्नेचर कारण आके जो को इफेक्ट्स पेता मतलब सपोज हनी में जो को नाय करे जी एडी आए एडी कोई इफेक्ट जो को आंदे सबकॉन्शियस माइंड ते पेज थी तो पान के थेरेपी जे थ्रू तो हैंडराइटिंग में थोड़ो चेंजेस करीने कराई सकूं. नो डाउट मुझे पहला सजेशन तो यही होता कि आई नो थोड़ो मुश्किल पे बैंक में ने अगर सिग्नेचर जल्दी हो तो यानी के चेंज करनो बट अगर आंदे सिग्नेचर में सच्चे बहुत की खोटो है तो यू शुड चेंज इट. बट अगर आई नता ज करी सको तो आने जेड़ो पहला चोको पांजे हैंडराइटिंग थी साधारण वड्डी उनी खपे तो वो आई करी सकता थोड़ी वड्डी आई सिग्नेचर सेम सिग्नेचर वड्डे साइज में करी सकता तो से करो. कप ग्राफोथेरेपी का हैंडराइटिंग में आंजे सिग्नेचर कारण आंजे कॉन्शियस माइंड ते जो को खोटो असर पे तो अनके पा ऊंधो करी सको. ओके थैंक यू
અને કોઈક જો હે ને માઇક ચાલુ હોય એવું બી બંધ કરાય એવું બહુ ડિસ્ટર્બ કરે તો વચમાં. ओके हजी कोई के की तो पंजी सिग्नेचर में हजी की देखाणो जो को आके पूछनो है कान में करो मीनिंग है जो Nishka, 1 minute. Can you mute people? 1 second. ઓકે. I don't. Okay, done. ध्यान सिवाय कोई के हजी की डाउट सिग्नेचर रिलेटेड? I'm audible અહીંયા દીપ્તિ દીદી? હા. Okay, okay. Okay, so હેવર સુધી પાન એરો પ્રોબ્લેમ્સ કરો અહીં તો કરો થઈ શકે અને જો મીનિંગ કરો આય તો જ્યાં આકે પહેલા ચો અગર નીચે જી સાઈડ આए તો નર્વસનેસ આए डिप्रेशन થઈ શકે કોઈ જો હુક આए એચ में तो पास्ट में कदाक व्यक्ति अटकेलो आए सो दीज आर द वे કે प्रॉब्लम के तो आइडेंटिफाई કરી ગયો કે વ્યક્તિ જે નેચર કે બહુ જિદ્દી આए તો ही प्रॉब्लम आए પણ આને આગળ કરો आइडेंटिफाई કર્યો આए તો અનકે સોલ્વ કરે જો બી કિક તો ઉનો ખપે or else it is ફક્ત આइडेंटिफाई કરીને કો કરા સારે ઉઠીને આવ આકે ચા કે આકે ને ગુસ્સો બહુ જલ્દી અચી અને તો નંડી નંડી વાતે ગુસ્સો કરતા પણ આ હોડા સ્ટોપ થઈ ને તે મુકે ચંદ તો એ તો મુકે બી ખબર है हनमे करो नवाई हंजो आऊं को करा so these after identifying the problems we need a solution तो ग्राफोथेरेपी ही solution है અને just like ग्राफोथेरेपी is similar to homeopathy અહીં ચાલુ કરતા ના કોઈ instant આકે અહીં જો બહુ દિવસ में मुझे एकदम मन बदलायो खपे मुके अने गुस्सो ज ना આવ્યો खपे તેડો નાય થીએ વાળો ओके અહીં કેટલો બી કરો मन के आंजे सबकॉन्शियस माइंड के अगर आके चेंज करनो आए तो अनके मेहनत भी लग दी ने अनके समय भी लगे वारो है तो અહીં જો કઈ 10 મિનિટ में बस मतलब થઈ જો ખપે આપણો અઠવાડિયો ગ્રાફોથેરેપી કઈ અને મુકે એકદમ ફ્રી થયો ખપે પ્રોબ્લેમ સોલ્વ તો એ નાય થીએ વાળો પણ અહીં એક અઠવાડિયો પ્રોપરલી ગ્રાફોથેરેપી કરો તો आई कैन गारंटी आके फरक ख्याल अचतो जन भी प्रॉब्लम ते पा वर्क करदासी अनमें आके फरक ख्याल अचतो सो आई आवटे जो को पेपर एंड पेन आए अंतेज पाकड़ी ग्राफोथेरेपी जी पैटर्न ट्राई करदासी which is this. एक second. Here. So these are called waves. जो को घनी बार इन ननपण में भी नेरे आउंदा घना बधा लोको स्कूल्स में भी कर रही है but simple है आके start from the above and end at the above. एक मिनट. यहाँ था मुझे स्ट्रोक स्टार्ट भी ऊपर थी तो बाय द टाइम इट इज कमिंग टू द एंड वो भी ऊपर है तो एड़ो ना गुनो कपे का ऊपर थी स्टार्ट के ऊपर करते करते धीरे धीरे वो नीचे हलो गयो तो ये मगज में रखे का ऊपर थी स्टार्ट क्यों है ने मुके एंड भी ऊपर करे जो स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव एंड एट द पॉजिटिव सेकंड ही जो को गैप है बो लाइंस जे वच में हडा ई गैप ट्राई करे जो को सेम अच्छे અહીં પહેલી બો 3-4 વખત કરતા તો થોડોક ઉપર નીચે થીંદો થોડોક મિસમેનેજ થીંદો બટ ઓવર ધ ટાઈમ રોજ ઈ ધ્યાન રખે જો કે હું જેટલી વાર કરા મુજો ઇક્વી ડિસ્ટન્સ वो वेव्स जी वच में जो वो डिस्टेंस है वो माई ठिकाणे धीरे धीरे इक्वल આવ્યો ખપે एंड दिस इज समथिंग जो को અહીં રાજ્ય સુમે પહેલા હું કરો કપોય 5 મિનિટ્સ કરો દિવસ જા कपोय एक ब्लैंक पेज जितली भी वार लगे पण हकड़ो ब्लैंक पेज भरीने करो हणे अंजा फायदा करो कि हनके कड़े करे जो
firstly this will help calm your mind. એટલે જડે કોઈક દિવસે આકે લગે કે મગજ में બહુ જ વિચાર હલે તો મન શાંત જ નતો થયો કેટલો બી કરા મેડિટેશન કર્યો હી કર્યો પણ મગજ શાંત નતો થયે કે વિચાર નકરે જ નતા તડે શાંત મનથી એક જગ્યાએ વ્યો બ્લેન્ક પેપર ખણ્યો અને પ્રેફરેબલી બ્લુ પેન ખણો બ્લેક ન ખંજા બ્લુ કલર જી બોલ પેન ખણો ને ही वेव्स पंजी रीते स्टार्ट करो आके वक्त એટલો ધ્યાન રખે જોય કે સ્ટાર્ટ બી ઉપરથી કરે જાય એન્ડ બી ઉપર કરે જોય એન્ડ નીચે ન વ્યો ખપે અને આઈ કેન ગેરંટી અહીં 5 મિનિટ કરો કે આખો બ્લેન્ક પેજ ભરીને કરો બાય ધી એન્ડ એટલીસ્ટ 50% ઓફ ધ થોટ્સ આંજે મગજથી નખરી વ્યા ਹੁੰਦਾ એટલીસ્ટ નથી વધુ બી થઈએ પણ આટલા તો નખરી જ વ્યા ਹੁੰਦਾ ઘણે લોકો એડા હોય જેની કે રાત જો નીંદર જ નથી અચે આંકી બી કરા રાત જો સુમેલે થઈએ જ નતો મુકે ફોન નો પેતો અડધો કલાક હાડા આસા પેસા કરાતી ઉપર નીચે થયાતી પણ નથી અચે તાઈ એડા લોકો ही સુમે પહેલા ही ટ્રાય કરો સુમે જે 10 મિનિટ પહેલા શાંતિથી ટેબલ તે વ્યો આરામથી ને અનકે પ્રેક્ટિસ કરો એન્ડ વન્સ યુ આર ડન પ્લીઝ કોઈ ફોન ન ખંજા કોઈ આરામથી વનો ને સુમીરો પાછો ફોન ખંડા તો કરો થીંદો આંજો માઇન્ડ જોકો શાંત થયો હોય આંજા થોટ્સ બંધ થયા ફોન ખંડા એટલે યા તો વોટ્સએપ ચેક કરતા યા તો વરી કોઈ રીલ સ્ક્રોલ કરતા એટલે વરી આંજો મગજ એક્ટિવ થયે જો ચાલુ થીંદો વરી કિક થોટ્સ અચીંदा સો પ્લીઝ ડુ નોટ ડુ ધેટ આરામથી કરો ને પછી જેડો બંધ કરો ગાદલે તે વનીને આરામથી સુમીરો વચમે કી ન કરો एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो अगर कोई है जन के ही प्रॉब्लम्स फिलहाल फेस नता थी निंदर भी अच्छे थी मन शांति मळे ने छताय आके ही करनो है देन ऑल्सो इट इज वेरी गुड हंती करो थिंदी आंजो जो का थॉट्स है ना अनके प्रॉपर फ्लो मलदो जी वेव्स में फ्लो आए एडी रीते आंजे मगज के भी एक मस्त फ्लो मलदो कहीं जडे भी किक भी विचारदा ना प्रॉपर लाइन वाइज कहीं की कम भी करदा ना तांजो डिसाइडेड हुंदो कि ही करे जो ही स्टेप 1 2 3 एंड देन मिशन अकम्प्लिश्ड तो हेडी रीते आंजो माइंड भी सरखी रीते ट्रेन થઈ हुंदो सो प्लीज ही ट्राई करजा इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट કે મળે લોકો ही ट्राई करो ને હનમે भी આગળ પાછળ આકે કદાચ की डाउट्स અછે કે કી भी અછે તા મુજો નંબર તા આયા જા માટે હું શેર भी कर दिस पाछो ता આઈ મુકે કટે भी WhatsApp તે વજો कहीना राव ही એટલો ટ્રાય क्यों है इज इट राइट और रॉन्ग बरोबर है कि न तो सिग्नेचर हो जो को भी है आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइस तो प्लीज मुके जो ता आके गाइड भी करी सकदी तो कहीं खोटो करदा ना तो ही भी समझो कि जस्ट लाइक आई खोटी मेडिसिन गनो तांजे हेल्थ पे इफेक्ट आए तो अगर ग्राफोथेरेपी का हैंडराइटिंग कदा खोटी वंदी तो आंजे सबकॉन्शियस माइंड ते इफेक्ट अचींदो 100% and that is something जो को पाके न क्यों खपे पांजे सबकॉन्शियस माइंड भी पांजी हेल्थ वांगे એટલો જ ઇમ્પોર્ટન્ટ આય અજ પા બી એટલો સોણું તા મેન્ટલ હેલ્થ અવેરનેસ ડિપ્રેશન થી બહાર અચનું હંથી બહાર એન્ઝાઇટી કે લડનું તો મેન્ટલ હેલ્થ भी એટલી જ ઇમ્પોર્ટન્ટ આય સો પ્લીઝ અનવટે भी ફોકસ કરો એક્સક્યુઝ મી નિષ્ઠા હા હા વન પોઈન્ટ નિષ્ઠા ही લાઈનો એટલે મળે કરી શકે કોઈ એજ બાર આય એનીથિંગ ઓફ Nothing, ધેટ नहीं, no age bar at all, no medical bar, nothing. ઓકે वो वर्ष जो छोकरो भी अगर अनके फावे तो पेन पकड़ीने करनू तो भी करी सके ने 100 वर्ष जो माड़ू के भी फावदो है तो उ भी करी सके दिस इज जीरो साइड इफेक्ट्स आके हंती Okay. कदे भी की भी नेगेटिव नहीं थी पॉजिटिव थींदो पर नेगेटिव तो 100% नहीं थी हन Okay. सिवाय भाई गजबदी पैटर्न्स भी हुई थी बट दैट इज अकॉर्डिंग टू द केस वो मणि लोको ले ना है बट ही एक पैटर्न है जो को मणि लोको ले मणि एज बार में ने आके ब्यो भी किक मेडिकली फेस थिंदो है तो भी आई ही पैटर्न करी सको था देयर इज Okay. नो इशू एट ऑल एक्चुअली मेन नंदर न अचे जो कारण इट इज ऑलमोस्ट आफ्टर 40s or 45 सो उन्हीं लाइ करी बहुत सारो थींदो आई थिंक सो नेरो Okay. 40-45 को एक ना निंदर ना अचे जो भी मेन रीजन ही जाए कि आंजे मगज में बहुत थॉट्स होता यस 40-45 एज आंजा छोकरा पेणे वाला आई तो नीचे लगन जे जा थॉट्स आई क जेंट्स आई तो हणे रिटायरमेंट एज अच्छे थी
मुके मेडिकल हम्म। एक्सपेंसेस भी नेना है, मुके घर जो भी नेनु है, so that me and my family can be happy, financially good. अनि के ही प्रॉब्लम आए उच आई Okay. टीनेजर्स भी ने रो तो मुके कॉलेज में मुके की रोनु है, मुके अंजो टेंशन है. सो एज प्रमाणे टेंशन बदलाई दो पण टेंशन मणी के कोई भी एड़ो ने जो को जीरो स्ट्रेस लेवल ते कम करे तो ने थॉट्स रात जो अचना अंजो मेन रीजन ई भी है कि रात जो आवटे कोई डिस्ट्रैक्शन है ना आ साथे कोई व्यक्ति बोले न तो घणे लोको तो आजकल सोशल डिटॉक्स करे था એટલે કો કરે 10 વાગે પર ફોન જ છડી દે હાણે મુકા કોલ ન કરજા પ્લીઝ મુજો સોશલ डिटॉक्स है सो दे आर लाइक हाणे फोन भी नाय ही भी नाय પેલા એડો वो કે લોકો રીડિંગ કરતા વા તો કે આંજો મગજ હું કે સારી વસ્તુ અહીં વાંચ્યા કે કર્યા અનમે હે ને ગુડ થોટ સાથે અહીં સુમોતા પણ ਉਹ આદત બી લોકો में નાય સો રાત જો ટાઈમ મેળવાય જો કો અહીં પણજી જાત સાથે એકલા આયો ભલે આજુબાજુ લોકો ਹੁੰਦਾ તો બી આંજો મન એકલો હોય નો ઓન ટાઈમ આંજી ઓવર थिंकिंग બહુ એક્સીડ થઈ હતી બહુ બધા વિચાર છે જો કો નેગેટિવનેસ બી है जो को विचार करे जी जरूरत नहीं खराब में खराब विचार भी तड़े जद्दा क्योंकि आंजी विचार के स्टॉप करे लेके आए ज ना तो दैट इज द रीजन व्हाई घणे लोगों के नींदर ना आचे तो हन में करो थिंदो आंजा स्टॉप थॉट्स बंद थिए जा चालू थिंदा का दिस इज नॉट द टाइम जो को मुके विचारो खपे अगर मुके विचारना है तो कोई आ विचार दिस आराम थी टाइम गनीने पण हेवर नो दिस इज माय रेस्ट मोड आई शुड स्लीप नाउ तो ही करे थी आंजो मन भी शांत थींदो को बस खत्म अजे दिवस जो जोको विचारनो हो जोको करनो आ मड़े करी गड़यो है घणे मुझे दिवस खत्म किए तो मुके मुझे दिवस के एक सारो एंड दिनु है नहीं थैंक यू okay and apart from that also आके हजी भी कदे जी आऊं चो डाउट्स होय कही करे पोय आकेड़ो लगदो एक आई नीड टू डू माय ओन हैंडराइटिंग एनालिसिस को मुके जाननु है को मुझे इनमें करो हम बेटर करी सका तो ही इशू आए तो हम ग्राफोथेरेपी थी की सॉल्व करी सका तो आई डू प्रोफेशनली आ हैंडराइटिंग एनालिसिस कराती सिग्नेचर एनालिसिस कराती ने ग्राफोथेरेपी भी कराती ने थेरेपी यूजुअली इनिशियल 2 to 3 months जी होय पोय अकॉर्डिंग टू द केस અને આંજો ઇશ્યુ કેટલો સિવિયર આય અન પ્રમાણે 3 months 6 months હેડે રીતે બી વેરી એન્ડ અગર આંજો કિડ બહુ નંઢો આય સે 3-4 years જેડો જોકો પ્રોપર લખે જો હજી સખે નાય પણ અનકે બી ઇશ્યુઝ એટલે કિડ્સ में યુઝ્યુઅલી કેળો થયે કે અચાનક બહુ ચીડચીડ કરે તો अचानक आंजो काल सुधी आंजो छोकरो मार दो न वो गुस्से में हाथ न હતો પણ અચાનક અનમે આટલી એનર્જી આય કે મારે તો અંતિ ના સહન જ નથી થયે એમ કે આસમે જ છે તો હેડા મળે ઇશ્યુઝ જો કો કિડ્સ ચાહી ઓ બી અસી વિધાઉટ હેન્ડરાઇટિંગ તા ડ્રોઈંગ જે વે થી ને એડી રીતે બી સોલ્વ કરુતા so that is also an option available in case he is still not learned કે લખે જો લેટર્સ ઇંગ્લિશ જે લેટર્સ હજી ન શક્યો હોય तो भी angiography possible है. Okay. That's all from my side. But कोई के अजी कोई doubts का की होए तो please. Okay. So thank you Nishtha. Thanks a lot. અજ ही વિષય સુણીને પહેલા ही વિષય મેં કદે સુણેલો ન હો અને આજ ही વિષય મેં સુણીને બહુ સારો લાગ્યો. That is something very new to us. It's very new but बहुत इंटरेस्टिंग भी है. न्यू सामे इंटरेस्टिंग भी है. जे भी रिकॉर्डिंग सुन दो के जे भी नहरी दो आई एम श्योर के वो आके कांटेक्ट करे वारो जाए because it is really very nice. It was very nice. Something very good that એટલે की खैने एज में भी ऐसे की सके ऐसे ओड़ो लगो अज तो it was really good. It was really nice. Thank you so much. અને ખાલી એટલો જ પ્રશ્નો ही कोर्स કોઈ भी કરી શકે કે ना ये कोर्स कोई any qualification needed or you can just go for it? ना there is zero qualification required for this. कोई भी जन के करनो है ही करी सके तो में डिप्लोमा कोर्सेज भी आई शॉर्ट एडवांस ने कोई एडवांस कोर्सेज भी अच्छे था. So it is not just nature and heat. This relates to the extent का आके अगर कोई health issue भी अच्छे वारो है तो वो आगे प्रेडिक्ट કરીને જઈ શકાતી કે આકે હાર્ટ જે ઇશ્યુ જો मतलब पॉसिबिलिटी आए
કાંજા બોન્સ વીક થઈને મતલબ બોન जी कोई इश्यू आके આગળ અચી શકે તી તો હેડો પ્રિકોશનરી લેબી હશે આકે જઈ શકો તા Okay. So it is not just behavior and subconscious mind, but health wise भी हटली on फक्त अकड़े handwriting थी खबर पई सके थी कि आके future में ही issue possible आए तो हेवर थी अंदे कम करो हेवर थी you try Okay. to make it kind diet change करो तो हेडी रीते का वो issue થઈ શકે એટલો યા તો avoid થઈ વને કપા અગર આકે 100% આગળ વણીને અચેજવાળો હોય તો એની intensity ઓછી થાય ને એટલો ઇફેક્ટ નથી જેટલો હેવર અનમે તાકાત હોય. So this is also for medical reasons. Okay. Okay. તો આઈ એમ શ્યોર કે આજ ઈ નેરી ઈ એપિસોડ નેરી મળે જણા ટ્રાય કરતા કી નક્કી આગળ વધે જો એની આવ દે વિલ ટેક હેલ્પ ફ્રોમ યુ એની ટાઈમ whenever they want. તો આશા હે કે જે બી નેરે તો અને જેકે બી કી હેલ્પ ખપતી હોય અહીં નિષ્ઠાબેન વટે ચોક્કસથી વની શકો યા ઉની કે કોન્ટેક્ટ કરી શકો તા એની ટાઈમ. So Sure. thank you Nishtha, it was really very nice. કિક બહુ સારો લગો કિક નવો સખેલાય બી મળ્યો અને ખબર બી પઈ કે હેન્ડરાઇટિંગ થ્રુ બી પાકે કી ખબર પઈ શકે એટલે હાણે હાણે સિગ્નેચર કરીને આકે કી દીનું ઊંધો તો બહુ ધ્રા લગદી બીકોઝ ઓડાથી જ આકે ખબર પઈ વેંદી કે અસી કહેड़ा आहियूं તો હાणे ઈ કોન્શિયસ થઈ વેंदासीं असीं और हिकिड़ो क्वेश्चन Good, आहे good, निष्ठा, good. हिकिड़ो क्वेश्चन आहे हाँ અહીં H અને A વિશે તાઈ બોલ્યા हम्म કોરો ગુડ आहे કોરો ના आहे કેડી રીતે ડ્રો કરનું પણ બાકી जा જે લેટર્સ અહીં हम्म એન બારે में પણ હूंदो न બાકી जा હા. મળે લેટર્સ કે કોરો કેડી રીતે ડ્રો કરનું ગુડ आहे ના आहे हाँ वो है ना लाइक ऑल स्मॉल लेटर्स જેટલા બી આઈ ઈ હા कैपिटल आई कैपिटल एम तो घणा ऑलमोस्ट ऑल लेटर्स आई जंजो अलग अलग मीनिंग आए હા टाइम ना એટલે મળે કવર બી ના કરી શકા અને સેકન્ડલી કે હા આઉં પ્રોપર સખાઈ એટલે મુકે પ્રોપરલી બહુ અલગ લેટર્સ में डिफरेंशिएट करते आवड़े तो અહીં અચ્છા પછી રીતે કરતા પોસિબિલિટી આए કે લેટર બ્યોકિક છે તો નહીં બ્યોકિક જ સમજોતા હા So every letter has its own and मैं for example आके चाहता P I letter P હા અંથી આકે ખબર પે કે સામે વાળો વ્યક્તિ કેટલો હેલ્પફુલ આય કે ફિઝિકલી કે મેન્ટલી બી બ્યો કોઈ વ્યક્તિ કે કેટલો હેલ્પ કર દો આઈ હા તો વાંજો ક્રિએટિવ માઇન્ડ કેટલો આય આકે નેચર કેટલો ગમે તો ને અહીં નેચર સાથે કેટલા જોડાયેલા આયો સે છે તો દરેક લેટર જો અંજો પણ જો હુઆય અચ્છા એટલે હજી પણ એમે ઘણે બધો જાણીને શીખી ઘણે શકાયો आहे તો અગર પોસિબલ थिए त नेक्स्ट सेशन कॾहिं હજી ॿई વખત ગને में अचे त असांखे वधारे नॉलेज मिलंदो શ્યોર એની હા ટાઈમ રેડી એની ટાઈમ હા एटलीस्ट फॉर एच अने जे अजपा सखियासी वो હા पंजी हैंडराइटिंग में गोतींदासी पांच ए હા अने एच में पा गोतींदासी अने पंजो नेचर पा केड़ा आयो से खबर पई वेंदी अजपा के एटलीस्ट जे नरे हुंदे एटलीस्ट आज हूं तो विचारींदो जकड़ी बार હા नेरी હા ने भी आज आऊं भी पंजी साइन कई है एड़ा तो उनके नेरी ना नेरी आती मुझे एच कड़ा है ने ए कड़ा है सो आई एम ट्राइंग टू फाइंड इट आउट कि भाई आऊं के हाउ आई एम बिकॉज पंजो पा केड़ा आयो खबर पवंदी हिन में जा भी थोड़ी थोड़ी विल ट्राई इट મેઇન તો સિગ્નેચર કેટલો ઇમ્પોર્ટન્ટ आहे અને કોરેલા आहे કોરો ડિટેલ में ખબર પઈ હજી यस यस हाँ ઈ हाँ ખબર हाँ જડે સિગ્નેચર ચાલુ કઈ કરે જી તડે ખબર હોત તો વધારે સારો હોતી हाँ एटलीस्ट पा न तो पांजी तो चलो हाणे चालू थई हाँ, वई है हाणे जे हाँ। ग्रोइंग चिल्ड्रन नहीं उन्हीं के पा एटलीस्ट चई सकदासी હા હા पांजे ग्रैंड चिल्ड्रन के क्योंकि पांजा छोकरा भी एटला वड्डा थई वया हाणे के पा उन्हीं जी सिग्नेचर हाणे પાંચ એટલો चेंज न करी ઇમ્પોર્ટન્ટ सको ખબર પઈ કે પેપર સાઇન કરના ही પણ हाँ हाँ સિગ્નેચર કોરો आई ओटलो જ जो ખબર पई हाँ, पर हाणे पा आज बे के चई सकदासी थोड़ो की भी હા एटलीस्ट બરોબર आहे हाँ 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 बरोबर श्योर श्योर तो हाँ। निष्ठाबेन वटानु घणे सखेला मल्यो आहे तो थैंक यू निष्ठाबेन थैंक यू सो मच एंड असी ट्राई करबो के हजी एकड़ो सेशन गने लाइ जी चा के हजी की हजी थोड़ा एकड़ा बो लेटर्स में पाके खबर पवंदी सो थैंक यू सो मच हाँ निष्ठाबेन याद है yes yes I'm there thank you so much thank you हाँ કે બી મુકે પ્લેટફોર્મ દનો કદાચ જો મોકો દનો મુલે બી हाँ हाँ સરસ એક્સપિરિયન્સ હો and it is always good to share your knowledge हाँ કદે બી મુકે કોન્ટેક્ટ કરાય I'll always be ready at least for next time as there are vowels
AEIOU हुन हम्म। हुन 5 लेटर ते एटलीस्ट वताईंदा त मड़ी के की न की कम अची वेंदो। हू Sure. 5 लेटर्स मड़ी में होया ज त we'll try to find it out ourselves only something. And नवा हुंदा जे interested खूब ज हुंदा, surely they will contact you and we will also try to contact you. Though for few letters also we can try to contact you. Okay, thank you so much. Thank you. Thank you. ઉષા ભાભી આજે નાલે में જ H અને બોય અચી વ્યા છે हाँ तो हूँ जाऊँ आज रात जो हाणे हूँ मुझे फाइंड आउट करनो है એટલે હાणे ડ્રા લગે તી હાणे સિગ્નેચર કરલા ડ્રા લગે તી કે આ કેડી એ ખબર પઈ હન so thank you Nishtha Thank once again you. thank you and we'll try